Today our topic is diphthongs. RP, received pronunciation, has a large number of diphthongs, uh, sounds which consist of a movement or glide from one wall to another. So when we talk about diphthongs, there is a glide from one wall to another wall. So a wall which remains constant and does not glide is called pure wall. Okay. So that is called pure wall that we have already studied. वो जो pure wall जो है उनको हम जिसमें कोई glide नहीं पाई जाती. And one of the most common pronunciation mistakes that result uh, in a learner of English having a foreign accent is the production of pure walls where diphthongs should be pronounced. Okay, so usually what happens in Pakistani context, what happens that most of the time where there is there is the need for diphthongs, usually we use a pure wall. यहाँ पे किसी भी वर्ड के अंदर एक डिप्थोंग की जरूरत होती है, वहाँ पे हम एक पेयर वॉल जो है उसको क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं. सो इन डिप्थोंग वी हैव अ ग्लाइड फ्रॉम वन वॉल टू अनदर. तो प्योर वॉल में देयर इज नो ग्लाइड, प्योर वॉल में ग्लाइड नहीं होती है. लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होती है, एक ग्लाइड होती है. सेकेंड पार्ट की तरफ आप क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं. एंड in terms of length, diphthongs are like the long vowels described earlier. Means we have discussed about long vowels too, and we have discussed short vowels and long vowels, and today we are talking about diphthongs. So in terms of length, diphthongs are like the long vowels described above. So perhaps the most important thing to remember about all the diphthongs is that the first part is much longer and stronger than the second part. Okay, so this you have to keep in your mind. In diphthongs, we have two parts, means two parts, and from one part or one wall, we glide to another. जो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होता है that is longer and stronger as compared to the second part. Okay, so that is why for example most of the diphthong I, as in the word I, okay, or I consists of the vowel, and only in about the last quarter of the diphthong does the glide to E become noticeable. Okay, so it's just I. So most of the time we remain stick to the first sound, and then we move on to the other. और वो slightly noticeable है, वो ज़्यादा नहीं है. Okay, so that is why we say the first part is longer and stronger. So it is I. Okay, so we go like this, and uh, as the glide. Yes. Uh, First one, which one? No. I mean, I'm just giving you the example. Okay, if you write the word, if you write the word Eye, and when you would just give the transcription of that word, तो आप इसमें टू वॉल्स को जोड़ेंगे, आप उसको डिप्थोंग के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. तो आपके पास जो आपने शॉर्ट वॉल्स पढ़े हैं, देर इज वन साउंड आ, ओके, सेकेंड साउंड इज ई. ओके, सो वो दोनों ज्वाइन हुए हैं. तो जब इसको अब देखें कि आई की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ डिप्थोंग को ही यूज कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई वहां पर साउंड है ही नहीं. तो एक्चुअली वो जो साउंड आगे वो साउंड आएगी तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया. क्योंकि यहाँ पे तो एक एग्जांपल दी गई है कि जो वर्ड आई है, एक तो प्रोनाउन है ना आई, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे. अगर हम उसकी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई. इसी तरह से जो आई आंख है, ओके, उसको भी जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो तब भी हम उसको क्या लिखेंगे, आई. तो इसमें टू साउंड क्या है, अवेलेबल है. उन टू साउंड्स में जो फर्स्ट साउंड है दैट इज लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सेकंड साउंड. सेकंड साउंड इज लेस नोटिसेबल, उसमें हम लास्ट पे जाते हैं. सो as the glide to E happens, the loudness of the sound decreases. Okay, ना सिर्फ ये होता है बल्कि वो, so if you just pronounce this sound you would just say I. Okay, so E पे जाके वो बिल्कुल loudness भी कम हो जाती है. जो
साउंड है वो भी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, एंड इट एंड्स देयर. सो दैट इज व्हाई दे से कि जो एज अ रिजल्ट द ई पार्ट इज शॉर्टर एंड क्वाइटर. तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, जो सेकंड पार्ट है ई पार्ट है दैट इज शॉर्टर एंड quieter. Okay, so most of the time, foreign learners must therefore always remember that the last part of the English diphthong must not be made too strongly. Okay, so foreign learners they know about that. The total number of diphthongs in English is 8. How many diphthongs are there? 8 diphthongs are there. 8. Okay, so the easiest way to remember them is in terms of three groups. इन टर्म्स ऑफ थ्री ग्रुप्स. उन 8 जो डिफ्थोंग्स है आपके पास, उनको आप 3 ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. और उन 3 ग्रुप्स को अगर आप डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आप उसमें जो बैनर हेडिंग है वो आप बनाएंगे, डिफ्थोंग बनाएंगे, और फिर उसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे. इसकी पिक भी मैं आपको भेज दूंगा. ओके, तो 2 ब्रांचेस में अब डिवाइड करेंगे, और उन 2 ब्रांचेस में एक ब्रांच जो होगी वो होगी सेंटरिंग, और जो सेकंड ब्रांच होगी दैट वुड बी क्लोजिंग. ओके, सेंटरिंग और क्लोजिंग. तो एक है सेंटरिंग डिफ्थोंग्स और फिर है क्लोजिंग डिफ्थोंग्स. सेंटरिंग डिफ्थोंग्स एंड क्लोजिंग डिफ्थोंग्स. तो क्लोजिंग जो डिफ्थोंग्स हैं उनकी फर्दर हम 2 काइंड्स बनाएंगे. ठीक है, मीन्स कि उनकी 2 ब्रांचेस बनाएंगे. तो एक वो क्लोजिंग डिफ्थोंग्स हैं कि जो ई पर एंड हो रहे हैं, और एक वो क्लोजिंग डिफ्थोंग्स हैं जो ऊ पे एंड हो रहे हैं. ओके, तो ये 2 उसकी क्लोजिंग. क्लोजिंग इनको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ई हमारे पास जो साउंड है वो क्लोज वॉल है. इसी तरह से जो ऊ साउंड है दैट इज ऑल्सो क्लोज वॉल. हम उसमें टंग का जो फ्रंट, सेंटर या जो बैक पार्ट है उसकी हम बात नहीं कर रहे, बल्कि हम जो डिस्टेंस है उसके हवाले से हम इनको जो हम देख रहे हैं. तो जो सेंटरिंग आपके पास जो डिफ्थोंग्स हैं उनको सेंटरिंग डिफ्थोंग्स को हम सेंटरिंग इस वजह से कहते हैं कि ये तीनों जो ग्लाइड करती है एक साउंड दूसरी की तरफ, तो वो एंड होती हैं आ साउंड के ऊपर. तो आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं कि जो 3 साउंड्स जो अ साउंड पे एंड हो रहे हैं उनको आप देख रहे हैं. ठीक है, आ साउंड, आ. ओके, सो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास सेंटरिंग डिफ्थोंग में, सेंटरिंग डिफ्थोंग का कितने का ग्रुप है, 3 का. क्लोजिंग डिफ्थोंग में हमारे पास ई पर खत्म होने वाले भी 3 हैं और ऊ पे खत्म होने वाले 2 हैं. तो बेसिकली 3 प्लस 2 ये 8 डिफ्थोंग्स आपके पास क्या हैं, बनते हैं. तो आपने इनको इस शक्ल में याद रखना है तो आपके लिए आसानी होगी, आप इनको भूलेंगे नहीं. एंड इफ यू जस्ट कीप ऑन मिक्सिंग दम तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप माइंड में नहीं रह सकेंगे आपकी. तो आप इसको इस तरह से माइंड में रखें कि बेसिकली देयर आर 3 diphthongs which are centering diphthongs and 5 diphthongs which are closing diphthongs. और उन closing diphthongs, 5 closing diphthongs में से there are 3 which which end at e and there are 2 which end at u. तो इस तरह से आप उसकी डिवीजन बना के रखेंगे. So if you look at the first diphthong, that is ia, ia. Okay, so ia, that is the first diphthong. So ia. Can did you get it from your notes? Ia. Okay, so the first sound is e, second one is ia, ia. So as in fear. Okay, as in fear, as in clear, as in beer. Okay, so most of the time when we pronounce these words, what happens that the last raw sound वो क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है. सो आप उस डिप्थोंग तक ही रहते हैं. सो यू से फिया, फिया. ओके, क्लियर, you end at okay, and then beer, you remain at that. तो उसकी एक ही डिप्थोंग की आपके पास एग्जांपल्स हैं. सो अब इसकी जब ट्रांसक्रिप्शन देंगे तो व्हाट वुड यू से, you would say that uh, the glide begins at E and moves towards A. The lips are neutral.
The glide starts from a front unrounded wall just above the half close position and moves in the direction of central unrounded wall between half close and half open position और mid close और mid open position. अब इसमें आप ग्लाइड को भी चेक कर सकते हैं. ये जो एरो का आपके पास जो निशान है इट शोज वो ग्लाइड को शो कर रहा है कि वो ई से अब स्टार्ट हुए हैं और आ तक अब पहुंच गए. ई आ ई आ. ओके, तो ये मैं क्योंकि उसको सेपरेट बोल रहा हूँ और थोड़ा जोर दे रहा हूँ, वरना जब आप इसको आप कह सकते हैं कि स्विफ्ट बोलते हैं तो उसमें फिर वो साउंड आपस में ठीक तरह से मिक्स हो जाती हैं. तो यहाँ पर आप वो पॉइंट आप कहाँ पर लगाएंगे जहाँ से आपकी साउंड ग्लाइड करके नीचे की तरफ आ रही है. तो यहाँ पर जो सारी साउंड्स हैं सेंटरिंग वॉल सेंटरिंग डिफ्थोंग जो है उनकी वो एक वॉल से दूसरे वॉल तक ग्लाइड करते हुए मीन्स कि ई से आ तक पहुंचेंगे. ओके, ईयर. ओके, ईयर. ओके, लाइक you also have example here, okay, beer or and then fears. Okay, so in this way that you just move from one wall to another. Okay, so do you have any confusion in this sound? Ear, ear, ear. Okay, और इसमें जो ग्लाइड है इसमें बल्कि आप इसको और माइंड में रखेंगे शवा. ओके, ये ग्लाइड जो है वो तीनों की जो ग्लाइड कर रही है वो कौन से साउंड की तरफ कर रही है? शवा जो साउंड है उसकी तरफ वो ग्लाइड कर रहे हैं. ओके, and then we have a second centering diphthong that is air, 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 air. Okay, so centering diphthong is air, air, air. जी जी. I don't actually have pages in front of me. Okay, so that is why I cannot tell you. Means your pages are not with me. Okay, so okay, let me check it. Okay, yes, it's on page 17. Okay, it's on page 17. Page number 17, it's air, air. Okay, air, air. Okay, okay, okay. Let me. It is on page 18. Okay, the first sound that is on page 18, and the second one that is on page 17. Okay. Okay, so yes, so ear, the first one, and the second one is air, air. Okay, so you can also look at the examples. Okay, so when we talk about examples in air sound, that is flare. Okay, that is hair, that is scare. Okay, scare, hair, flare. So these examples are the examples of a second diphthong. Okay, so scare is also the example. Okay, so how would you describe this one? The glide is a front half open unrounded wall from a front half open unrounded wall to a central wall between half close and half open position. अब इसमें भी जो ग्लाइड है, आप दोनों साउंड्स को इकट्ठा करके देख लें. दोनों में जो ग्लाइड आपको नजर आ रही है वो एक ही तरफ नजर आ रही है. ईयर और एयर में, क्योंकि इन दोनों की जो लास्ट साउंड्स हैं वो एक जैसी. कैन यू गेट माय पॉइंट? ओके, लास्ट साउंड जो है वो दोनों की एक जैसी है बिल्कुल, बल्कि अभी जो तीसरा पढ़ेंगे उसकी लास्ट साउंड एक. इसी वजह से हमने इसको now you are getting the point why we said that this is a centering diphthong. centering क्यों है? क्योंकि तीनों की तीनों जो साउंड्स हैं वो ग्लाइड करके सेंटर की तरफ आ रही हैं, शवा की तरफ आ रही हैं, इसी वजह से ये सेंटरिंग है.
ओके, अब आपके सामने वो तीनों आप रख लें अपने सामने एंड यू कैन जस्ट सी कि किस तरह से वो जो ग्लाइड है वो हो रही है. ओके, ईयर, एयर एंड नेक्स्ट वन वी हैव उआ. उआ, उआ. ओके, सो उआ. सो उआ जो साउंड है ये इंग्लिश में कम जगहों पर आप कह सकते हो कि कम वर्ड्स में यूज होती है, लेकिन इसके बावजूद इट इज देयर. ओके, सो because we do not pronounce like that usually in our Pakistani English, so that is why it is difficult for us to recognize these sounds in different words. Okay, so हम तो कैसे बोल रहे थे poor. Okay, so poor, तो वो तो कोई एक डिफरेंट ही साउंड बनती है, so that is very much different. So ua sound, that is pua, pua, and tua. So I'm getting tour. Okay, so tour is very much different from tua. Okay, so poor is okay. So poor and poor. Okay, so they are quite different. So that is why we find the difficulty in judging these sounds in different words. इसी वजह से जो transcription है, like students they were asking once that transcription is very much difficult. Transcription difficult नहीं है, साउंड को याद रखना मुश्किल नहीं है. प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन एवर यू प्रोनाउंस वर्ड्स इन अ रॉन्ग वे, तो आप उसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं दे सकते, क्योंकि तो आप उसको जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो है ही बिल्कुल डिफरेंट उस साउंड से, तो आप कौन सा साउंड ढूंढ के लाएंगे. आपको तो पता. और दूसरा ये है कि आप साउंड को मिक्स कर देंगे, क्योंकि जब व्हेन यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग वन वर्ड राइटली, तो व्हाट वुड हैपन एक्चुअली, यू विल टेक a wrong symbol for that word. Okay, तो अब आप पुअर बोल रहे हैं, तो पुअर तो आप इसके लिए तो पता नहीं कोई अजीब सी साउंड लेके आएंगे. ओके, एक डिफरेंट साउंड लेके आएंगे. So that is why we have three centering diphthongs. Number one, ia, ea, ua. Ia, ea, ua. Okay, so सारी की सारी एक ही उस पे एंड हो रही हैं. So ua, that is the glide starts from a back rounded wall uh, above the mid clause and mid clause position, and moves in direction to a central unrounded wall between half closed and half open position. The lips are weakly rounded at the beginning and neutral at the end. Okay, certainly when the lips they are neutral at the end. Why? Because there is a centering diphthong, that is a. Okay, so ua, ua. Okay, so in the beginning they are, because we pronounce in a fast way. So actually when uh, when we start pronouncing this word, lips are weakly rounded, but then they become neutral. So these are three centering diphthongs. Okay, so you can just repeat these sounds with me. Ia, ea, ua. Ia, ea, ua. Ia, ea, ua. Okay, so these are three centering diphthongs. And I will also send you, yes, I will also send you a chart. उसमें उसमें वो प्रोनाउंसिएशन होगी डिफरेंट साउंड्स की, आप उनको देख भी लेंगे. ओके, बल्कि आप उनको सुन के प्रैक्टिस भी कर लेंगे. जी, क्या बोला हुआ? Where they are, I didn't get. Yes. Which words? Yes, means you are saying कि उसमें वो फिट नहीं बैठता. So that is sure. Okay, sure. Okay, basically this is the sound. Okay, it's not sure. Okay, so it's sure. नहीं, बैठाने नहीं है, साउंड उन पे बैठे हुए हैं, आप गलत बोलते रहे. Yes, the song starts in a slightly closer position than in the wall, as in. ओके, सो वो तो उन्होंने जो सेपरेट जो साउंड है ना, सेपरेट जो साउंड है, पुट और पुश. ओके, सो वो तो सेपरेट साउंड है ना, उसमें तो ऊ साउंड यूज हो रहा है, लेकिन उसमें डिफथोंग तो नहीं यूज हो रहा. उन्होंने कहा कि जैसे हम पुट या पुश बोलते हैं, तो उसमें जो पोजीशन होती है ना हमारी,
जो ऊ की पोजीशन होती है वो जब हम डिफ्थोंग में उसे लेके आते हैं तो स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन होती है। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि 100% जो एक ही पोजीशन एग्जैक्ट आप उसमें नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें जो टंग है उसकी जो ग्लाइडिंग है, उसकी जो पोजीशन है, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। तो जब ऊ एक डिफ्थोंग में प्रोनाउंस होगा और एक सिंपल वर्ड में प्रोनाउंस होगा प्योर वॉल के तौर पे, तो उसकी पोजीशन में स्लाइट डिफरेंस होगा। वो स्लाइट, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट स्लाइट डिफरेंस। दे आर नॉट सेइंग कि जो पुट वर्ड है in that we have diphthong. No, okay, there is no diphthong in that. वो तो सिंपल है, क्वेश्चन गुड। ओके, तो वहां से वो ग्लाइड करके नीचे की तरफ आता है। ओके, तो डिड यू गेट? ये मसला तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो डिफथोंग है ही नहीं ना बेसिकली। उन्होंने तो ये कहा है कि पोजीशन के हिसाब से तो अ बिट ऑफ चेंज देयर इन द पोजीशन। तो वाई दैट चेंज इज, क्योंकि वहाँ पे ओपेयर वॉल के तौर पे यूज होता है और यहाँ पर वो डिप्थोंग के तौर पे यूज होता है। इसमें वॉल ने ग्लाइड करना होता है दूसरे वॉल की तरफ, इनकी प्रॉपर्टीज। इसी वजह से जब मैंने आपको फोनोलॉजी की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में देखी थी, और बल्कि फोनेटिक्स से जब हमने स्टार्ट किया, तो मैंने आपको ये बताया था कि उसमें साउंड की कम्बिनेशन से साउंड एक दूसरे को अफेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो वो भी स्टडी हम इसी में ही करते हैं कि किस तरह से साउंड जब कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट करते हैं। उस पर स्लाइट इफेक्ट इज देयर। स्लाइट इफेक्ट इन द सेंस के उसकी जो पोजीशन है वो स्लाइट चेंज होती है एज कंपेयर टू when it is used in pure vowel or as pure vowel. Okay, so next we have closing diphthongs. Closing diphthongs, uh, uh, so closing diphthongs have the characteristic that they all end with a glide towards a closer vowel. तो उनको क्लोजिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो, अब इसको हम सेंटरिंग क्यों कहा हमने? क्योंकि इन सब की जो ग्लाइड है वो किस तरफ है? वो जो पहले तीन हमने पढ़े, इनकी ग्लाइड सेंटर की तरफ है, सेंट्रल जो वॉल है हमारे पास उसकी तरफ है, दैट इज आ। ओके, सो दैट इज शवा साउंड। तो हेयर वो क्या कहते हैं कि इनकी जो डिप्थोंग्स है इसकी जो ग्लाइड है दैट इज टुवर्ड्स closer wall. Okay, so because of the second part of the diphthong is weak, they often do not reach a position that could be called close. Okay, अब वो ग्लाइड हो रही होती है लेकिन अल्टीमेटली इतना क्लोज अभी जाती नहीं, तो ग्लाइड एंड हो जाती है। तो यहाँ पर भी वो इफेक्ट थोड़ा सा हमें नजर आता है। So the important thing is that a glide from a relatively more open towards a relatively more closed wall is produced. Okay, so three of the diphthongs glide towards E. Okay, as described below. Okay, so A. Okay, so the first sound that is A. Okay, let me check which page do you have this sound. Okay, it is on page 15. Page 15. Okay, so A. First one. A. A. You must also keep in your mind which sound is produced in which way. Okay, वो तो आपने अब शॉर्ट वॉल्स तो पढ़े हुए हैं ना। यू मस्ट नो व्हेन वन साउंड इज बीइंग प्रोनाउंस कि वो कैसे है। ओके, सो ई वो भी आपको बता दिया कि क्लोजिंग है, सो ए। ओके, ए। ओके, सो हियर वी हैव एग्जांपल्स लाइक वी हैव पेन, we have pace, we have made, and we have paid, we have face. Okay, so these examples they are there. Okay, here you can also late, day, vain, fail, fail. Okay, so these are the examples of this sound a, a, a. Okay, so during the articulation the glide is from a front unrounded wall, mid close, and mid open unrounded wall, mid close and mid open, to a front unrounded wall just above the mid close position. ओके, सो दैट इज अब को ए की जो साउंड है उसकी जो पोजीशन है आपको पता है, और आप देखें कि उससे वो ऊपर की तरफ क्या कर रही, ग्लाइड जो है वो कर रही है। तो आप यहाँ पर इसके साथ ही आप एक साउंड इधर लिख सकते हैं और एक ऊपर लिख सकते हैं, या दोनों को इकट्ठा करके भी एक जगह पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो एक्चुअली ओके, दे जस्ट शो दैट ये जो एरो है इट शोज दैट दिस साउंड ग्लाइड्स फ्रॉम दिस साउंड टू अनदर। जिस तरह से एरो का जो आप कह सकते हैं टिप ऑफ द एरो, तो वो बताती है कि यहाँ से साउंड स्टार्ट हुई है और उस तरफ क्या किया है, उसने ग्लाइड किया है। तो
literally this shows that. And then we have the second sound जो आपने start में मैंने आपको बताई थी जब मैं diphthongs start किए थे, I told you कि two sounds का combination, वो मैं I के बारे में बताया था, I. Okay, the second sound that is I. Okay, it's on page 14. Okay, so that is I. Okay, so it is, तो ये जो आपका उधर है ना वॉल, वैसे तो वो लॉन्ग वॉल है, जो पास एंड बाक, ओके, हार्ट, उसमें हमने यूज किया था. सो हियर वी हैव आई. ओके, सो आई. पेज नंबर 15 पे कहाँ पे था? नो, दैट वाज ए ए. ओके, डोंट मिक्स them please. Okay, this one is I, I. Okay, so you can look at the, like we have the example by, we have fine, okay, we have site, we have file, okay. So we also have high, fly, I, okay. So tie, time, nice, okay. So these are the examples, and it starts from R sound to to E, okay, R to E, okay. तो आई, ओके, ये तो बहुत सिंपल सा साउंड है, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन. ओके, तो आपने उसको इजीली फर्स्ट को प्रोनाउंस करना और फिर सेकंड की तरफ जाना. इसी की एग्जांपल स्टार्ट में मैंने आपको दी थी कि वो आई जो ई वाई ई भी आप लिखेंगे तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन आप देंगे तो यू वुड से आई. ओके, अगर आप आई प्रोनाउन भी लिखेंगे आई एम, ओके, सो आई भी लिखेंगे तो दैट वुड बी आई, उसको ट्रांसक्रिप्शन उसकी इसी तरह से आप देंगे. एंड this was the yes, this was the second one. Yes, yes, वो जो उर्दू वाला मद होता है ना, वो दैट इज. ओके, एंड देन वी हैव द थर्ड साउंड इन क्लोजिंग diphthongs जो ई पर एंड हो रहे हैं. ओके, इट इज ओई, ओई, ओई. और साउंड हमने पढ़ा था ना, जैसे हॉट, हॉट, उसमें जो साउंड था. सो हियर वी आल्सो यूज दैट साउंड, और फिर ई की तरफ वो ग्लाइड करेगा, सो दैट इज ओई. अ बिट, ओके. Yes, so a bit, lips would be a bit rounded, okay, in this. Okay, so the glide begins near the back mid open position and moves towards E. Okay, so oi, oi, like in voice, voice, and like in joy, J Y, J O Y, joy, koi, koi, C O Y, koi, and then void. Okay, so these are the examples, like we have foil, boy. Okay, so these are the examples of, examples of these closing diphthongs. Okay, this closing diphthong, and then if you just pronounce them together, so that would be okay. अभी आपको difference आप उसमें देखेंगे किस तरह से है. A I oi, A I oi, A I oi. Okay, so pain, high voice, pain, high voice, and then play, and then fly, and then joy. Okay, so E is common among them, that is why they are called closing. क्योंकि E basically क्या है, that is a closing sound. Okay, जो close wall है हमारे पास, close pure wall है, that is why वो सारे क्योंकि ग्लाइड उसी की तरफ कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, हम उनको क्लोजिंग डिप्थोंग्स कहते हैं. सो थ्री डिप्थोंग्स, ओके, दे आर क्लोजिंग डिप्थोंग्स. और क्लोजिंग मैंने आपको कहा था बेसिकली 5 है, लेकिन 3 जो है वो एंड ई पे कर रहे हैं और 2 जो है वो एंड ऊ पे कर रहे हैं. ओके, तो 3 ओके, 6 डिप्थोंग्स हमने पढ़े, एंड देन वी हैव डिप्थोंग्स एंडिंग इन ऊ. ओके, बेसिकली तो ये क्लोजिंग डिप्थोंग्स ही हैं, लेकिन ये दे एंड. Two diphthongs, they glide towards U, so that as the tongue moves closer to the roof of the mouth, there is at the same time a rounding movement of the lips. So this movement is not a large one again, because the second part of the diphthong is weak. Okay, so second part of the diphthong is weak certainly, and
the first part that is a bit strong. And these two sounds, first one is you can have them on the page. Okay, first, okay, so they are on page 16. Okay, first you will look at the second sound and then you will look at the first sound. Okay, second sound. Okay, so at your page. Okay, so certainly the first one is, आप इसमें देखेंगे पहली जो sound है वो शवा है और second जो sound है वो ऊ है. Okay, so it is very simple. Ow, ow. Okay, what is this? Ow, ow. Okay, so it's just like in hound. Okay, HOME, hound, hound. Okay, moused, moused. Okay, so and then we will also have the sound ground, ground, GROWN, ground. Okay, and here we have slough and cow and dow and cout. Okay, cout. Okay, these are the examples. And then you would say the glide is from a central unrounded wall between mid clouds and mid open position to a back rounded wall just above the half cloud position. The lips are neutral in the beginning and rounded towards the end. Okay, the lips are neutral in the beginning and rounded towards the end. And the second sound is a bit difficult to pronounce. Maybe I'm not that much accurate in pronouncing that sound, but still you have to rely on me. Okay, so you can also consult some of the other pronouncing things. So it is sometimes, okay, so if you just pronounce this sound in a very very easy way, so that would be a bit longer than the previous sound, and it would be pronounced like this. It is ow, ow. Okay, so, but most of the time, the English people, the way they pronounce this sound, they say ow, ow. Okay, so they just pronounce it like this. Okay, so they put a, a bit of uh, a bit of stress on the first sound. Okay, so it is ow, ow. Okay, so it's just like this. Okay, but to make it a bit variant or a bit different, you can also say it ow, ow. Okay, so they say ow, ow. Okay, so they just pronounce it like this. So it is loud, loud, gown, house. Okay, loud, gown, house, town. Okay, so these are the examples. Which one? ये नो, तो अगर तो ये हो ना, वो उसमें हाउम आता है, हाउम बोला था. ओके, अब इसमें आप डिफरेंस देख लें. इसी वर्ड से ही अंदाजा हम लगा लेते हैं डिफरेंस का, कि जब आप हाउम बोलते हैं, हाउम, इट इज शार्पर एंड शॉर्टर. ओके, तेज भी है और मुख्तसर भी है. जो सेकंड साउंड है, अ बिट लॉन्गर और स्लोअर. ओके, लॉन्गर भी है और स्लोअर भी है. कैसे? जैसे कि आप ये नहीं कहते हाउस, यू डू नॉट से इट हाउस, यू से हाउस, हाउस. ओके, तो ये डिफरेंस आप इन दोनों के दरमियान रखेंगे. इन दोनों वर्ड को ही माइंड में रख लें. हाउम, ओके, यू नॉट से हाउम, ऐसा तो नहीं कहते हम हाउम. यू से हाउम एंड यू से हाउस, यू डू नॉट से हाउस, हाउस. ओके, तो यू से हाउस, हाउस. तो उसमें अब इन दोनों में, अब देखिए लास्ट वाला सिंबल दोनों का एक जैसा है. दोनों में फर्क क्या है? आ और आ और आ. ओके, बस इन दोनों में ये डिफरेंस है. जो पहले वाली साउंड है वो क्या है, थोड़ी शॉर्टर है. दूसरी वाली क्या है, लॉन्गर है. ओके, तो उसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस है. अब पहले वाली साउंड है उसमें क्या आ रहा है, शवा आ रहा है. अब इसमें जो आपके पास जो पेज है ना, उस पर जो एग्जांपल्स लिखी हुई है वो सारी गलत हैं, क्योंकि वो तो कॉपी पुरानी हुई है. ठीक है, इसमें आप देखें ना, आउ पे एग्जांपल जो लिखी है वो कौन सी लिखी हुई है, बॉय लिखा हुआ है. बॉय तो इसमें नहीं आता ना फिर. ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स गलत लिखी हुई है यहाँ पे. वो मेरा ख्याल है ऊपर वाली उन्होंने कॉपी कर दी हुई है नीचे, जो है ना उस ऑई साउंड की जो एग्जांपल. इससे ऊपर थोड़ा सा आप जाके देखें, बॉय, जॉइन, वॉइस. ओके, सो वो उन्होंने वही कॉपी कर दी है नीचे. तो दे आर नॉट द राइट साउंड. तो ये जो राइट साउंड है अभी मैंने आपको बताया, जैसे जैसे क्या है, लाउड. ओके, जैसे कि गाउन, जैसे कि हाउस, जैसे कि फ्राउन. ओके, तो ये जो एग्जांपल है, जैसा कि हाउस. ओके, आप उसमें जो है वो लेके आ सकते हैं. Okay, so these are 8 diphthongs in English, and if you just
pronounce them, okay, together. So that would be like this, okay. Ia, ea, ua. Ia, ea, ua. Okay. So a, I, oi, au, or ow. Okay. So these are eight diphthongs in English. And then we also have another term. Which one? Closing. There are five closing diphthongs. Okay. So five, the first three which end at e. Okay. So a, I, oi, a, I, oi, and then ow, 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 and ow. Okay. So this is the pronunciation. Okay. So there is another secret which you, if you have in your mind, then you can be good at pronouncing these sounds. अगर आप प्योर वॉल पे, अगर आपकी ग्रिप है, प्योर वॉल पे आपकी ग्रिप है, तो अल्टीमेटली ये साउंड्स आपके लिए मुश्किल नहीं है. अगर प्योर वॉल आपको नहीं आते, लाइक यू हैव जस्ट read about short walls and long walls, and if you have grip over short walls and long walls, then that would be easy for you. कि आप जब इस डिफ्थोंग्स का प्रोनाउंस करेंगे तो थिंग्स वुड बी इजी फॉर यू. लेकिन अगर आपको प्योर वॉल ही नहीं आते तो डिफ्थोंग्स आपको कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे साउंड को आपने मिलाना है, तो साउंड का पता ही नहीं है आपको, तो हाउ वुड यू मिक्स देम टुगेदर. एंड देन वी हैव ट्रिफथोंग्स. ओके, ट्रिफथोंग्स ये शॉर्टर हैं और इन पे ज़्यादा हम बात नहीं करते, क्योंकि ट्रिफथोंग में काफ़ी सारी चेंजेस with the passive time आ रहे हैं, और most of the people they are just going from triphthongs to diphthongs. Okay, जो मॉडर्न इंग्लिश में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसको देख सकते हैं. The most complex English sounds of the vowel type are triphthongs. They can be rather difficult to pronounce and very difficult to recognize. Okay, तो प्रोनाउंसिएशन तो इनकी डिफिकल्ट है ही, लेकिन रिकग्निशन इनकी बहुत डिफिकल्ट है कि किस वर्ड में हम ट्रिफथोंग लगाएंगे या उसको बोलेंगे कैसे. ट्रिफथोंग, सो ट्रिफथोंग क्या है, आप ट्राई से ही अंदाजा लगा रहे होंगे. ओके, तो ट्राई, that is three. Okay, that is tricycle. Okay, so that is triphthong is a glide from one wall to another and then to a third. A triphthong is a glide from one wall to another and then to a third. तो आप अपने सामने जो उसकी डेफिनेशन है उसकी भी आप देख सकेंगे. तो वो क्या है कि थ्री डिफरेंट, आप कह सकते हो कि जो पोजीशंस होती हैं टंग की होती हैं जब आप इसकी प्रोडक्शन आप कर रहे होते हो. वन वॉल टू अनदर एंड देन टू अ थर्ड, ऑल प्रोड्यूस रैपिडली एंड विदाउट इंटरप्शन. ये नहीं होना कि आपने, हाँ समझाने के लिए हम उनको सेपरेटली थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन जब आप उसको एक वर्ड में बोल रहे होते हो तो इट इज प्रोनाउंस रैपिडली. ओके, तो वो विदाउट इंटरप्शन प्रोनाउंस होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी if for example careful pronunciation of the word, okay, of the word H-O-U-R. Okay, so it begins with a vowel quality similar to a and then goes on to a glide towards the back close rounded area, okay, for which we use the symbol u, then ends with a mid central vowel a, shava. Okay, so it is H-O-U-R. Okay, we pronounce it, okay, awa. How do we pronounce it? Awa, awa, awa. Okay, so इसमें देखें आपके पास जो डिफ्थोंग है ना, डिफ्थोंग आउ, ओके, उसके आगे अ लगा देंगे, so that was awa, awa. Okay, but sometimes, okay, there is differences, they're also made. So triphthongs can be looked on as being composed of five closing diphthongs described in the last section with added on the end. अब आपको याद रखने का जो सबसे आसान तरीका है ट्रिफथोंग्स का, वो क्या है? ट्रिफथोंग्स को याद रखने का सबसे, आपके क्लोजिंग डिफथोंग्स कितने हैं टोटल? 5 है. कितने क्लोजिंग डिफथोंग्स हैं? 5 क्लोजिंग डिफथोंग्स हैं. 5 क्लोजिंग डिफथोंग्स में से 3 जो है वो किस पे एंड हो रहे हैं? दे एंड एट ई, ऐसे ही है. एंड 2 दे जस्ट एंड एट ऊ. ओके, 3 एंड हो रहे हैं ई पे, 2 एंड हो रहे हैं ऊ पे. ओके, तो बेसिकली टोटल हमारे पास कितने डिफथोंग्स होगी क्लोजिंग? दे आर 5 डिफथोंग्स. अब उन 5 डिफथोंग्स के आगे आपने एक साउंड को ऐड करना है, तो आपके पास ट्रिफथोंग्स बन जाएंगे. और वो साउंड कौन सी है? शवा. ओके, आपने शवा ऐड करना है, आ. ओके, तो इंग्लिश में कितने ट्रिफथोंग्स हैं? देयर आर
5 ट्रिप्थॉन्ग्स, 5 ट्रिप्थॉन्ग्स। और वो 5 ट्रिप्थॉन्ग्स कौन से हैं? 5 क्लोजिंग डिप्थॉन्ग्स के आगे इफ यू ऐड अ साउंड आपके पास यू विल हैव ट्रिप्थॉन्ग। तो कोई याद रखना इसको मुश्किल है? समझ लगी ना आपको? ओके। तो इसको हम मैं आपके सामने बोल भी दे, इसके सामने इनके साउंड आपने याद, आपने नई चीज कोई भी नहीं याद करनी, आपने याद क्या रखना है कि देर आर 5 क्लोजिंग डिप्थॉन्ग्स, उन 5 क्लोजिंग डिप्थॉन्ग्स के आगे आ साउंड ऐड कर दें, यू विल हैव ट्रिप्थॉन्ग्स। ओके, सो ट्रिप्थॉन्ग्स आपके सामने लिखे भी हुए हैं और आप उनको देख भी सकते हैं। तो दैट इज फर्स्ट वन, एया, एया, आया, ओया, आवा, आवा, aua, 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 aua. Okay, so that is leia. Okay, the first one is okay. The example that is written in front of you, and then laya, laya. Okay, so हम liar बोलते हैं ना, liar, liar. Okay, हम तो पता नहीं क्या बोलते हैं बहरहाल. Okay, so loyal, loyal, and then power and Maua, Paua, and Maua. Okay, so these are the examples. Okay, so you will keep these examples in mind. So this was all about today. We have talked about diphthongs, and there are 8 diphthongs in English, and we have talked about triphthongs. In triphthongs, we have the combination of 3 sounds, and there are 5 triphthongs in English. And if we add a shava sound to 5 closing diphthongs, we have triphthongs in front of us.